Hello dear students, very good morning to all of you. How are you all? I think you are very fine and your home even also safe with your parents. So dear students, yesterday we have started our chapter that is called Houses and Houses. Lesson number 5 है ना. Lesson number 5 हमने कल start किया था and we have done our starter activity. And I hope you all have done this. Okay. So what was our starter activity? Here are some pictures which are given. So first picture is brake, second picture is cement, third picture is jacket, fourth picture is stones, fifth picture is about wood, and the next one feather, and last one paper. So here we have so many pictures given. So what should we have to do? We have to circle the things which are needed to make a house. एक घर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको हमें सर्कल करना है. So we have circled 4 things over here. हमने 4 चीज़ों को सर्कल किया था. पहला था brakes, second one cement, then stones, and the last one wood. Okay. So need a house, need for a house. हमें house की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Then houses we live in protect us from heat, cold and rain, thieves, wild animals, dirt and dust. So we feel safe and comfortable in our houses. First of all, सबसे पहले हमें house की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Why we need a house? We should need a house. हमें house की ज़रूरत पड़ती है. We must need a house. But why? क्यों? Because it protects us from heat, cold, rain, thieves, wild animal, dirt and dust. हमें ये बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखता है. जैसे बहुत गर्मी होती है, अगर हमारे पास छत नहीं होती, हाउसेस नहीं होते, सो वी लिव इन ओपन एरिया, और हम ओपन एरिया में रहते हैं. सो बारिश गिरती तो हम बारिश में भीग जाते, अगर गर्मी होती तो हम गर्मी में हीट अप हो जाते, ठंडी होती तो हम कोल्ड हो जाते. सो ठंडी, गर्मी और बारिश से हमें कौन बचाता है? हमारा हाउस, दैट इज आवर हाउस. So after that we can protect us from the wild animals also, है ना. animals घूमते हैं, उनसे हमें protection मिलता है. So we feel safe and comfortable in our houses. So हम houses में क्यों रहते हैं? Because we feel safe and comfortable. हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं अपने घरों में, है ना. So that's why we need a house, and house is very much important for each and every one. Okay, so if there is no house, जैसे अगर किसी के पास घर नहीं होता, so they made a hut, है ना, एक झोपड़ी बना के रहते हैं. Otherwise they can carry a house in a rent, है ना. रेंट पे वो एक घर ले लेते हैं और वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं. So in this way all the people have their homes now. Okay, so houses are most important part of our life. So in this way we will learn about so many different houses. Okay, today in this chapter we will learn about different types of houses. First of all, I want to tell you that there are mainly two types of houses. That is, the first one is kacha house and the second one is pakka house. We will understand these two types of houses one by one. Okay. So first of all, there are two types of houses, kacha house and pakka house. So in the kacha house we have the kacha houses. So what are kacha houses? So here is one paragraph given. So we will read the paragraph. Let's read out the paragraph. कच्चा houses are not very strong houses. जो कच्चा houses होते हैं वो strong नहीं होते. So they are made up of, वो कौन कौन सी चीजों से बनते हैं? So they are made up of M2T mud, मतलब होता है रेती, STRAW straw, then LEES leaves, BAMB bamboo, and last one that is stones, पत्थरों से. So in this way the kacha house made, है ना. These materials are used for making a kacha house. So they are
कई कच्चा हाउसेस जो हैं वो हमें विलेजेस में देखने मिलते हैं. यू कैन सी अ कच्चा हाउस इन दिस पिक्चर, है ना. दिस टाइप ऑफ हाउस इज कॉल्ड अ कच्चा हाउस. दे आर इजी टू बिल्ड एंड कॉस्ट वेरी लेस. ये जल्दी से बन जाते हैं और जल्दी से टूट भी जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. सो ये जल्दी से बन जाते हैं और इनमें कॉस्ट भी कम लगती है, पैसा कम लगता है. सो वी कैन मेक कच्चा हाउस एज अ टेम्पररी, है ना. हम कुछ टाइम के लिए अपना कच्चा हाउस बना के रहते हैं, देन वी विल मेक इट पक्का. वी विल मेक इट इनटू पक्का हाउसेस. So pakka houses we will learn tomorrow. First of all we have to understand about the कच्चा houses. क्या होते हैं कच्चा houses? कच्चा houses are those houses which are not very strong, जो काफी strong नहीं होते हैं. So we can find out these कच्चा houses in the villages. Okay, so village में ऐसे houses पाए जाते हैं. So what are the कच्चा houses? So कच्चा houses are the houses which are not very strong. And how they will made? आप ये कैसे बनते हैं? So they will made from the materials given here: MUD mud, STRAW straw, LEDS leaves, bamboo and stones. So from these material we made a कच्चा house. So dear students, you can see a picture of a कच्चा house here. Okay, I hope you all have understood about the कच्चा house. So here in this page number 2929, different कच्चा houses are given. So you can understand how the कच्चा houses are made. And कच्चा houses are not very strong, as there is the number one house that is called HUT, hut. Hut means होता है झोपड़ी. So let's read out. Huts are made up of mud, straw, dry leaves and bamboo. They are very weak houses. जो झोपड़ियाँ होती है that is called huts. Okay. So ये किस चीजों से बने हुए रहते हैं? Mud, straw, dry leaves and bamboo sticks. After that you can see a igloo. This is a ice house. Okay. This is made up of ice. Okay. So igloos are houses made up of blocks of ice found in very cold places. ये houses कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. हमारी एरिया में ये houses नहीं पाए जाते. Eskimos lives in igloos, यानी कुछ type of animals होते हैं Eskimos, वो igloos में रहते हैं. After that there is, you can see a caravan. Caravans are houses on wheels, जो चक्कों पे houses होते हैं. So we can keep our house from one place to another place. They can move from one place to another place. यानी हम ऐसे houses को, जैसे caravan यानी van के अंदर houses होते हैं, so हम अपने इस वैन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह अपने हाउसेस को लेके जा सकते हैं. सो कैरावैन आर मोस्टली यूज्ड बाय द बॉलीवुड स्टार्स. यू कैन आप लोगों ने कभी कोई मूवीज या पिक्चर में देखा होगा कि उनके पास कैरावैन्स रहते हैं. आफ्टर दैट टेंट. जब भी हम कैंपिंग के लिए जाते हैं, सो वी यूज टेंट. एंड टेंट इज अ टेम्परेरी हाउस, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कच्चा हाउस. So tent is made up of canvas cloth, है ना, कपड़े से बना हुआ रहता है. So it is used by people who move from one place to another. They can be easily put up and packed away. Then what is written here? So this is a type of house that is a कच्चा house जो एक cloth यानी कपड़े से बना होता है. कौन से कपड़े से? Canvas cloth. So it can be easily put up and packed away. इसको पैक करके हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पे अपना टेंट प्रिपेयर करके घर हाउस बना के रह सकते हैं. After that, the last one, there is a कच्चा house that is called a house boat, which is on the river, है ना, वो जो पानी में पाया जाता है. और हाउस बोट इज अ हाउस ऑन अ बोट, है ना, जो नाव में बनाया जाता है. वी कैन सी देम फ्लोटिंग इन द लेक्स ऑफ श्रीनगर एंड बैकवाटर्स ऑफ केरला. ये ऐसे हाउसेस कहाँ पाए जाते हैं? श्रीनगर एंड केरला. लेक्स यानी होते हैं श्रीनगर के लेक्स में और केरला के
water bodies में. Okay, so in this way we have learned so different types of kacha houses. And kacha houses, what are kacha houses? Kacha houses are not very strong. They can made up temporarily. Okay, so जिन्हें हम temporarily बनाते हैं उन्हें बोला जाता है कच्चा houses. They are not very strong. They always easy to build and cost very less. Okay, we can find out these houses in a different areas like villages also. Okay, so here we have understood about kacha houses. So tomorrow, dear students, we will meet again and learn about pakka houses. So after that, I am giving you one homework. The activity is given here. Let's do activity here with me, all of you. The activity given on the page number 3030. कौन सी एक्टिविटी दी हुई है 30 पेज नंबर पे? लेट्स सी. नेम दीज हाउसेस. क्या कौन सी एक्टिविटी दी हुई है? आपको पिक्चर दिए हुए हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आर गिवन हियर. सो वी हैव टू नेम दीज टाइप्स ऑफ हाउसेस. सभी के नाम लिखेंगे. ओके, द फर्स्ट वन यू कैन सी, that is a tent. So here you can write T-E-N-T, tent. The second one is you can see, which house is this? Yes, it is called igloo. So write down the spelling of igloo. Number 3, that is a houseboat. H-O-U-S-E, house, B-O-A-T, boat, houseboat. And the fourth one is, you can see a picture of caravan. So here, caravan. C-A-R-A, caravan, van. So in this way, we have done this activity. So tomorrow we will learn about pakka houses. Today we have learned about kacha houses. I hope you all have understood about kacha houses. So do this activity on your book, dear students. Write down the correct spellings in a good handwriting. In text activity on the page number 3030. T-E-N-T, tent. I-G-L-O-O, igloo. H-O-U-S-E, house. B-O-A-T, boat, houseboat. And the last one, C-A-R-A-V-A-N, caravan. I hope you all have done your activity which is given on the page number 3030 and also understood about kacha houses. So dear students, bye. Take care. Have a nice